Hello, everybody. Welcome to this questions and answers session for Australia Skilled Migration. ये सेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कंडक्ट किया जाएगा because बहुत सारे questions हैं which concern the population at large. Therefore, we'll keep it bilingual. Thank you very much for sending in your questions. Those were really helpful. आपके क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिली कि आपके आज की डेट में क्या कंसर्न्स हैं जिसके आप आंसर्स सीख कर रहे हैं. So let's get started with the first question. The first question is, when are the state nominations going to open? Okay. So बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है. सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि when you say the state nominations are not currently open, look at it this way. Why are the state nominations not open? Not because Australia does not need more skilled workers या states में nominations कम हो गई हैं या quota कम हो गया, but because the DHA had allocated very little quota to the states. Therefore, states were, they were like kind of handcuffed. They could not issue more nominations even if they wanted to. And the reason कि DHA ने क्यों कम कोटा इशू किया है, पहले हमें ये लग रहा था कि ये शायद फेजेस में करेंगे, बट अब समझ आ रहा है जब उन्होंने अपना पॉइंट सिस्टम रिविजन इंट्रोड्यूस किया है कि DHA ने majority अपना कोटा that is for the year 23-24 and of course for the year 24-25 जो कि 1 जुलाई से होगा, वो पॉइंट्स टेस्ट रिविजन करने के बाद इंट्रोड्यूस करना है. सो बिकॉज देयर वाज गोइंग टू बी अ चेंज इन द पॉइंट सिस्टम, DHA हैड गिवन वेरी लिमिटेड कोटा टू द स्टेट्स ताकि पुराने पॉइंट सिस्टम के अंडर एक लिमिटेड लोग ही कोटा ले सके एंड मेजॉरिटी जो 23-24 का कोटा है वो अंडर revised point system allocate ho. The next question is, when will the lodge visa applications be decided? Now, I know बहुत सारे लोग disturbed हैं इस चीज से कि sometimes the DHA says the processing time for 491 is 12 months. Then they take it up to 24 months. Then they bring it down to 491. Then they take it up to 24 months. So it's a roller coaster ride for you people. Please do not get disheartened by the increasing processing time, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ यही प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की डेट में DHA बहुत एक्टिवली पेंडिंग वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहा है. DHA पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट्स भेज रहा है, DHA मेडिकल्स की रिक्वायरमेंट्स भेज रहा है, DHA कुछ केसेस में फॉर्म 80 की रिक्वायरमेंट भेजा है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने अपनी वेरिफिकेशंस शुरू कर दी हैं for those whose visa applications have been launched. So it will be fair to conclude that the DHA is looking at finalizing the pending applications very soon. The next question is police clearance and medical mandatory again? Okay, see, ideally जो police clearance की validity होती है वो 12 months होती है. कुछ केसेस में DHA पुलिस क्लियरेंस नहीं भी रिक्वेस्ट करता डिस्पाइट द पुलिस क्लियरेंस बीइंग ओल्डर देन 12 मंथ्स. बट अभी जिन लोगों का प्रोसेसिंग मोर देन 12 मंथ्स हो चुका है लॉन्चमेंट डेट, उनसे पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल्स की बाय एंड लार्ज रिक्वेस्ट रखी जा रही है, बाय एंड लार्ज. Therefore, I think it would be a good idea अगर आप अपनी पुलिस क्लियरेंस का प्रोसेस अभी से इनिशिएट कर लें, because it's a time consuming process, and medicals, the HAP IDs will be generated again if they want you to undergo the health examinations. The next question is, why is 490 visa processing so slow? I know, and I absolutely agree with you. It's a very valid question, especially जब DHA ने बहुत hopes and एक I would say कि एक बेट दी थी कि 491 वीजा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रायोरिटी वीजा होगा, बाकी सब प्रायोरिटी वीजा नहीं होंगे, 491 प्रायोरिटी वीजा होगा. सो यू शुड गो ahead and apply for this visa. Now they have been taking the processing time up and down, but I can show you that 491 visa की processing बहुत actively चल रही है. I know
आप लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे एंड यू लुकिंग लेफ्ट एंड राइट फॉर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन सी कि वीजा ग्रांट्स कुछ खास आ नहीं रहे हैं, बट probably you do not know the inside story कि processing बहुत fast है. हमें पता है on a daily basis how many requests we are getting and we are getting calls from clients कि आज मेरी verification होगी, आज मेरी verification होगी. So we do know that the DHA is looking at finalizing the visas, pending visas very soon. The next question is from some applicants who are asking why are high points required for engineering professionals? Okay, so my answer to that would be that engineering professionals basically तीनों सब classes के लिए apply कर सकते हैं, 189, 190 and 491. क्योंकि भी state dominations थोड़ी dry हैं, so maybe I'm assuming that these applicants have applied for a 189 subclass. Engineering professionals or engineering technicians क्योंकि MLTSSL list पे they are eligible for 189 and as you know 189 में higher point applications are given priority, so that is the reason why you probably think that the requirement is higher, but otherwise for 190 and for 491 definitely 65 points or higher are just good to go. Now the next question is what is the time frame taken after S56 requirement? So पहले मैं बता दूं S56 होता क्या है. S56 बेसिकली ईमेल नोटिफिकेशन होती है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स लॉज्ड वीजा एप्लीकेंट से फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं विच इज द पीसीसी, विच इज फॉर्म 80 और विच आर द मेडिकल्स. नाउ अब इनका क्वेश्चन ये है कि जब किसी पर्सन को डीएचए की तरफ से ये रिक्वायरमेंट की आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन आ जाती है, ऑब्वियसली दे हैव 28 डेज टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट. तो जब एप्लीकेंट्स ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं उसकी कितनी देर के बाद वीजा ग्रांट हो जाता है. नाउ देयर इज नो स्टैंडर्ड और प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन टू इट. इट कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम 15 days to 2 months, होने को 3 दिन बाद भी हो सकता है, होने को 2-2.5 महीने से ज्यादा भी लग जाए. सो इट एंटायरली डिपेंड्स फ्रॉम वन केस टू अनदर, बट considering that DHA is looking at finalizing the application soon, I think once you get an S56 request, it should not take very long for you to get your visa decision. Now, the next question is, will a new skills assessment be required after the point test change? That's a very good question. No. Skills assessment आपकी valid है for 3 years if you're talking about vetassess. And most states, most assessment bodies have the skills assessment valid for 3 years, some for 2 years. So skills assessment आपको new नहीं या renew नहीं करवानी. Point test change अगर होता है, it does not affect your skills assessment process, which is why we insist कि अगर हम उम्मीद रख रहे हैं कि 1 जुलाई से पॉइंट टेस्ट चेंज हो जाएगा तो आपके पास स्किल्स असेसमेंट ऑब्टेन करने के लिए बहुत थोड़ा 1-1.5 महीने का टाइम है. सो यू मे इवन वांट टू गो फॉर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग क्योंकि यही स्किल्स असेसमेंट आप कल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. Now, again, a question around visa backlogs. Is the visa backlog going to clear by June 30th? The way things are moving, I am guessing that majority of the pending applications will be cleared by June 30. And finally, kya ye new point system, will it be good or bad? Okay, so for offshore applicants, I believe this new point system is going to be very, very favorable based on whatever discussion papers they have published. I think, in fact, the point test revision is going to put offshore migrants at a huge advantage. So that was it for the questions. Thank you very much for your input once again. If you still have any questions or any unanswered query, please feel free to write into us on CaanWings@gmail.com or call us on our helpline, that is 78498 7849.